beautiful comparison mother has said. When we go to the exhibition, we are always required to be very relaxed, quiet, observant, and absorb everything that we are watching. So that is what she is saying, that take all the time necessary to see this exhibition. And I know this exhibition is for many lives. It is not just a one-time exhibition that we go and see, finish the Louvre Museum and come back. So we are on this journey. But what I thought of sharing was, how can we approach Savitri? मतलब हम यहाँ पे जितने लोग जमा हुए हैं, 12 लोग, हम सावित्री, हर कोई सावित्री को अपने अपने तरीके से अप्रोच करता है. जैसे चारुदी ने पहले दिन ही कहा कि हम एज अ गाइड सावित्री को, या कोई भी शेरन की या मदर की बुक है उसको देख सकते हैं. कभी भी कोई पेज खोला डिफिकल्टी में तो इट बिकम्स अ गाइड टू अस. हालांकि वो पर्सनल रिलेशन है हमारा सावित्री के साथ. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर, सिंस यू सेड यू आर अ काउंसलर, तो वो हमको अपने प्रोफेशन में भी मदद करता है. बट व्हेन वी से वी स्टडी सावित्री, इसका मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि हम पेज 1 से लेकर पेज 620 तक हम पढ़ते जाएं, समझते जाएं अपने मेंटल अंडरस्टैंडिंग से जो भी है. और आफ्टर those 2-3-5 years of study हमें लगे कि हाँ, अब हम सावित्री को एटलीस्ट मेंटली पढ़ चुके हैं, कुछ तो समझते हैं. अगर सब कुछ तो समझने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मेंटल कॉन्शियसनेस से हम किस तरह से सावित्री को, किन डिफरेंट अप्रोचेस से सावित्री को समझ सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे लगभग 12 तरीके एनलिस्ट किए हैं, जिसमें से मैं एक पे सबसे ज्यादा इलेबोरेट करना चाहूंगी, बट रेस्ट ऑफ इट, एंड आई एम श्योर आप लोग जब भी जिस भी स्पीकर को बुलाते होंगे पढ़ने के लिए सावित्री, वो कोई ना कोई इनमें से डेफिनेटली या मल्टीपल अप्रोचेस अपनाते होंगे. कोई स्पेसिफिक हार्ड कंपार्टमेंटलाइज्ड ये अप्रोचेस नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. पहला अकॉर्डिंग व्हाट दैट आई हैव एनलिस्टेड इज लिंग्विस्टिक. मतलब कि हम शब्दों को कैसे समझते हैं. इट वाज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक. कैसे समझे हम उस चीज को कि ग्रामेटिकली वो सही है. इनफैक्ट इंग्लिश के पंडित कहते हैं कि ग्रामेटिकली वो सेंटेंस सही नहीं है, लेकिन फिर भी श्री अरबिंदो द पोएट, द सियर पोएट, अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो उसका क्या मतलब है, उसका ग्रामर कैसा है, उसके मीनिंग कैसे हैं. जैसे उसमें जो मीनिंग निहित है, and that too we are talking of only superficial meaning. We are not talking of जो माता जी ने बताया उस फर्स्ट लाइन के बारे में, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक. तो मदर का जो एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने हुता बहन को दिया था वो डिफरेंट है. बट अगर हम उसमें ना जाएं और सिर्फ मीनिंग, वर्ड मीनिंग इस तरह से समझें, तो शायद हमें उसका एक अलग मीनिंग समझ में आएगा. एंड इंग्लिश में जैसे हम दो चीजें कहते हैं, कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन. मतलब एक का बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ निकलता है, दूसरे का कॉन्टेक्चुअल अर्थ निकलता है कि भाई हम किस कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो उसके कितने मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं. सो ये लिंग्विस्टिक है. एंड इसीलिए इसमें जब हम जैसे मैंने कहा इट वाज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, जब हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ डिफरेंट आयाम हर कोई, यानी एंड बहुत सारे स्पीकर्स ने इसके ऊपर बहुत घंटों बात की है, नाथकर्णी जी से लेकर सभी ने. एंड बहुत सुंदर लिंग्विस्टिक एनालिसिस भी इसका, मतलब मैं अगेन आई एम टेलिंग कि ये एक्सक्लूसिव मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किया होगा, सभी ने साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एटसेट्रा मिला के किया होगा. दूसरा है मीट्रिकल, जो हम हिंदी में मुझे नहीं पता अगर उसे छंद कहते हैं, लेकिन मीटर कैसे होते हैं इंग्लिश में, रिदम कैसा होता है इंग्लिश में, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने थोड़ा पढ़ के बताऊंगी. ऑफ कोर्स मुझे बहुत डीपली मीट्रिकल एनालिसिस नहीं पता. कुछ स्कॉलर्स हैं यहाँ आश्रम में और ऑरोविल में जिन्होंने मीट्रिकल एनालिसिस बहुत इलेबोरेटली सावित्री की हुई है, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और उन्होंने समझाया है कि कैसे इंटरनल रिदम, सिर्फ ओम का तो रिदम है ही, हमको माता जी ने बताया उसमें, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से अगर देखें तो उसमें कैसे रिदम है. तो अगर हम इसको हल्का सा पढ़ें तो शायद हम उसके इंटरनल रिदम समझ पाए. ये है पेज 61 पे. He is the substance, he is the self of things. She has forged from him her works of skill and might. She wraps him in the magic of her moves.
and makes of him his myriad truths, her countless dreams. थोड़े लाइन छोड़ के वो लिखते हैं, he is the maker and the world he made. He is the vision and he is the seer. He is himself the actor and the act. He is himself the knower and the known. He is himself the dreamer and the dream. So अगर हम इनमें देखें जो रिपीटेशन है he का बार बार, और ऑफ कोर्स इसको दूसरी तरह से भी स्टडी किया जा सकता है इन लाइंस को, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, लेकिन he is the maker and the world he made. He is the vision and he is the seer. So इसको जो जानकार लोग हैं उसको मीट्रिकल एनालिसिस में वो हमको बताएंगे कि देखिए इसमें इंटरनली ये दो मात्राएं, ये दो मात्राएं, ये दो मात्राएं एक साथ जा रही हैं, सो ये कैसे एक रिदम बनता है. और यूजुअली इंग्लिश में हर चीज स्ट्रेस पे, ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड, ही इज सो उस तरह से वो रिदमिक बनता है. हिंदी संस्कृत के रिदम्स अलग होते हैं, तो इसका शेयरविन ने खास ख्याल रखा है. इनफैक्ट मीट्रिकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सावित्री में जो पढ़ पाए, और शेयरविन ने शायद जितने भी मीटर्स पढ़े हैं या जितने भी क्या कहना चाहिए मात्राएं जिस तरह से प्रस्तुत की जाती हैं इंग्लिश में, उसको उन्होंने, हम जानते हैं मीट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने पोएट्री में किए थे वो सारे इसमें मिलते हैं. एंड स्कॉलर्स या साधक लाइक केडी सेठना जी, आर.वाई. देशपांडे जी और भी कई साधक हैं यहाँ पे अभी भी जो इस पे काम कर रहे हैं, और एक एक पेज का एक एक लाइन का उन्होंने मीट्रिकल एनालिसिस किया हुआ है, जो ऐसे लगता है माय गॉड कितना सुंदर है. और ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक जैसा चलता जाता है, ये चेंज होता है हर कहीं लाइन के साथ, कहीं कैंटो के साथ, कहीं टेम्पो के साथ, ये चेंज होता है. सो सावित्री को अगर हम पढ़ना चाहें कि एक अप्रोच है जो सावित्री में, वो मीट्रिकल भी हो सकता है अगर हम चाहें तो. क्योंकि और एक बात है कि शेयरविन ने फ्यूचर पोएट्री में ये बताया है कि देयर इज अ रिदमिक मूवमेंट, देयर हैज टू बी अ रिदमिक मूवमेंट इन पोएट्री. एंड वो रिदम का मतलब ये नहीं है कि हम उसे एंड में जैसे मेड, सेड, व्हाटएवर उस तरह का हम जो राइम करते हैं, जरूरी नहीं कि वो राइम हो. देयर हैज टू बी एन इंटरनल रिदम व्हिच वी हैव टू लिसन व्हेन वी आर वेरी क्वाइट विद आवरसेल्व्स, और वो बहुत प्रैक्टिस से आता है. मैंने ये भी सुना देखा है कि जो लोग सावित्री लाउड और स्पेशली जानकार जो हैं इस मीट्रिकल रिदम के, उनके पढ़ने का तरीका काफी अलग होता है और उन लोगों के स्ट्रेस काफी अलग होते हैं. हम लोग जो है वो अपने भक्ति भाव में पढ़े जाते हैं, वो अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जो इस तरह की स्टडी करना चाहते हैं वो उसको उन स्ट्रेसेस के साथ पढ़ के उसका मीनिंग कहीं शायद अलग निकलता है. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम बोलेंगे ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड, नाउ यू सी इट्स वेरी प्लेन द वे आई हैव रेड. लेकिन अगर हम बोलेंगे ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड, अगेन द मेकर इज स्ट्रेस्ड. And another way, he is the maker and the world he made. He, maker, world, all the three things are stressed. So इससे फर्क पड़ता है मीनिंग का when we read poetry in a metrical order. तो इसीलिए जो मीटर में एनालिसिस करना चाहते हैं वो इस अप्रोच को भी अपना सकते हैं. और एक अप्रोच जो इन दिनों मैंने काफी स्कॉलर्स को सुना पढ़ते हुए is to find Vedic symbolism in Savitri. है कुछ ऐसे स्कॉलर्स जो वैदिक सिंबोलिज्म पढ़ रहे हैं. उसमें से एक छोटा सा आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा in the very first canto, the symbol dawn, page 4. Dawn built her aura of magnificent hues and buried its seed of grandeur in the hours. An instant's visitor the god had shown. On life's thin border, a while the vision stood and bent over earth's pondering forehead curve. Interpreting a recondite beauty and bliss in colors, hieroglyphs of mystic sense, it wrote the lines of a significant myth, telling of a greatness of spiritual dawns, a brilliant code penned with the sky for page. इसके बाद की भी जो इमेजरी है इसी पेज पे, some a scholar or perhaps a Sanskrit scholar वो उसको जस्टिस कर पाएंगे जो वेदास भी पढ़ सकते हैं. अगर हम इसमें सिर्फ 2-3 चीजें मार्क करें, dawn built her aura of magnificent hues. Now dawn we know is Usha,
एंड इनफैक्ट एक बहुत सुंदर कोइंसिडेंस है कि शेरविन ने लाइफ डिवाइन का जो फर्स्ट चैप्टर लिखा, उसकी जो फर्स्ट वर्स उन्होंने कोट करी वो उषा के ऊपर है, दूसरी अग्नि के ऊपर है। सो शेरविन भी यहाँ पे उषा और अग्नि दोनों का जिक्र करते हैं, और वो दोनों लाइंस ऋग्वेद में से, दोनों जो लाइफ डिवाइन की हैं वो ऋग्वेद में से ली हुई हैं। यहाँ पे भी उनका पूरा पूरा जिक्र होता है। एंड आप देखें द कैंटो नेम इटसेल्फ इज कॉल्ड द सिंबल डॉन, वहां पे भी उषा से वो उनका फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है इन द लाइफ डिवाइन। सो दिस इज नॉट अ मेयर कोइंसिडेंस, देयर इज एंड वैदिक वेदास भी हम देखें कई बार वो उषा को आवाहन करके, अग्नि को आवाहन करके उनके ऋक्स शुरू होते हैं। So there have been studies to see what are the Vedic symbolisms that Sri Aurobindo has used. चाहे वो डॉन हो, उषा हो, अग्नि हो, या और कोई वरुण मित्र, जो भी दूसरे गॉड्स एंड गॉडेसेस जिनका मेंशन है वैदिक हिम्स में, उनके साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन को देखते हुए सावित्री में उस चीज का को रिलेट करते हुए ऐसे बहुत सारे स्टडीज अभी भी चल रहे हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट उसके लिए है कि हमें संस्कृत का जानकार होना, वेदों का जानकार होना शायद जरूरी होगा। फिर भी हम अगर सिर्फ श्री अरविंद का सीक्रेट ऑफ द वेदा पढ़ें और हम इन कैंटोस को पढ़ें तो हमें फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज काफी मिल जाएंगी। जैसे मैंने कहा अग्नि के बारे में उन्होंने बहुत लिखा है, हिम्स टू द मिस्टिक फायर पूरी एक किताब है अग्नि के ऊपर, तो उसका कोरिलेशन फ्रॉम व्हाट श्री अरविंदो स्पीक्स ऑफ एस्पिरेशन वुड बी वेरी ब्यूटीफुल स्टडी। डॉन किस रेफरेंस में, बिकॉज डॉन बार बार श्री अरविंदो स्टार्ट्स विद द सिंबल डॉन, देन ही गोज टू द इटर्नल डॉन। सो उसका मतलब क्या है, फ्रॉम विच डॉन टू विच डॉन आर वी मूविंग। Even in the Life Divine first verse, Sri Aurobindo talks about the successive dawns coming. And even in this canto, Sri Aurobindo talks about the successive dawns coming and going and coming and going. So wo jo succession of dawns hai, and then the eternal dawn coming, the eternal day coming, वो क्या है? So उन चीजों को corroborate करना, उन चीजों को study करना, again can be a very beautiful approach in studying Savitri. मैं इसके बहुत इलेबोरेशन में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरी अपनी इसमें स्टडी बहुत नहीं है। श्रुति, उन्होंने देश पांडे जी ने तो पूरी सिंबल डॉन पे एक पूरी किताब ही लिखी है। जी मैंने वो पढ़ी है। लेकिन व्लादिमीर ने भी काफी बोलता है। व्लादिमीर इस पे काम कर चुके हैं बहुत सारा, और रिचर्ड हार्ट्स ने रिसेंटली बहुत 2-3-4 आर्टिकल्स इसके ऊपर मैंने पढ़े, उन्होंने लिखे, बहुत अच्छी स्टडी है उनकी भी। तो इन सब चीजों में मतलब because they all know Sanskrit, they can very beautifully analyze and they have a very good background of Vedas. But usme bhi it is very interesting that one R.Y. Deshpande ji being a scientist, his approach has been different to even the Vedas and Savitri, and others have their own backgrounds, and with that when they approach Savitri uske alag hi ek khoobsurati nikal ke aati hai. So definitely that's the whole charm of each scholar bringing out something. Another thing that I always associate with, or I mean I have heard scholars associate with, is the Vedic prayer मृत्योर माँ अमृतम गमय, जो हम असतो माँ सद्गमय जो प्रेयर हम हमेशा चांट करते हैं, तो उसमें की जो लास्ट वर्स है मृत्योर माँ अमृतम गमय, एक्चुअली मुझे याद है सर ने, डॉक्टर रेड्डी ने एक बार एक टॉक दिया था इसके ऊपर कि एक्चुअली ये वैदिक प्रेयर जो है ये सावित्री में अकम्प्लिश होती है। लीड मी फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टैलिटी, एंड दिस इज ऑल सावित्री इज ऑल अबाउट। सो इवन दिस थीम इटसेल्फ ऑफ सावित्री फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टैलिटी is itself a subject of study, and which again connects it with Vedas. So it is a very intimate connection. It is as if we can say कि जो वेदास में शुरू हुआ था, जो एस्पिरेशन वेदास में शुरू हुई थी, वो सावित्री में, वो श्री अरबिंदो में कंप्लीट हो गई. The whole cycle is full, as if we can say. Then we have the Upanishadic strains. Now इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग लेटर श्री अरबिंदो ने लिखा था कि उनसे ये पूछा गया कि जो आपने इंग्लिश में सावित्री लिखी है वो क्या आपने वर्ड्सवर्थ के स्टाइल में लिखी है या आपने शेक्सपियर के स्टाइल में लिखी है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है तो ऑब्वियसली देयर आर नॉट स्टाइल में लिखना, लेकिन किस तरह की चीजें आपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है. एंड श्री अरबिंदो सेज ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इंग्लिश के या ग्रीक के कोई एपिक्स ट्राई किए हो, ऐसा कुछ. इफ एट ऑल देयर इज एनीथिंग इन सावित्री,
it has a Vedic and it has a Upanishadic and Kalidasian strain, he says. मतलब उनके राइटिंग में, सावित्री में उपनिषदिक एंड कालिदासियन इम्पैक्ट मिलेगा रादर, या उनके तरह की लिखने की हमें थोड़ी सिमिलैरिटीज मिल सकती हैं, बट नॉट द अदर पोएट्स हु वर इन क्वेश्चन. ऑफ कोर्स वी गेट सम लाइंस, जैसे एक बहुत फेमस लाइन है शेक्सपियर की, टू बी और नॉट टू बी, एंड इसमें श्योरबिंदु ने इतना ब्यूटिफुली उसको यूज किया है. टू बी इज नॉट अ पैराडॉक्स. I mean, it is as complete as to be or not to be. लेकिन वो जो phrase है, to be is not a paradox, to be is not a chance. तो उन्होंने जहां उस चीज को employ कर सकते थे, उन्होंने employ किया है, because they were perfect phrases, and it is not a conscious employment. We all know कि सावित्री उन पे अवतरित हुई, सावित्री उनके पास इंट्यूट होके आई, तो उन्होंने उसको लिखा है. पर ये चीजें जो उनके सिस्टम में थी, बहुत ब्यूटिफुली उन्होंने, क्योंकि इतना लिटरेचर पढ़ा हुआ था, चाहे वो इंग्लिश पोएट्स हो, कालिदास हो, उपनिषद हो, सब कुछ. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उपनिषदिक इसका पढ़ना चाहूंगी, जो आप सभी इससे पहले सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं और शायद एनालाइज भी कर चुके होंगे. बट दिस थॉट इज उपनिषदिक, एज आई हैव हर्ड फ्रॉम माय टीचर्स. Page 67, the secret knowledge. The absolute, the perfect, the alone, has called out of the silence his mute force, where she lay in the featureless and formless hush, guarding from time by her immobile sleep, the ineffable puissance of his solitude. The absolute, the perfect, the alone, has entered with his silence into space. I'm skipping some lines. The absolute, the perfect, the immune, one who is in us as our secret self, our mask of imperfection has assumed. He has made this tenement of flesh his own, his image in the human measure cast, that to his divine measure we might rise, etc. etc. So ये जो लोग उपनिषद पढ़ चुके हैं, शायद थोड़ा semblance with ईशा उपनिषद, थोड़ा semblance with other Upanishads, they can see the Upanishadic thought of the absolute perfect Brahman. And then, of course, one can write a thesis on the very page that we are studying right now. So, इतना dense Upanishadic thought भी है इसमें, और भी नहीं Upanishadic है because शेरविन की जो पूरी साधना है, वो वेदांतिक साधना उन्होंने लाई है, and it kind of पूर्ण हुई या कल्मिनेट हुई सावित्री में. So वो हम इसमें देख सकते हैं. Now, there has been some studies on philosophic understanding of Savitri, क्योंकि बहुत सारी philosophy भी हमको सावित्री में मिलती है. But मैंने कुछ ideas जो मुझे बहुत fascinate करते हैं in terms of सावित्री मैंने लाए हैं. जैसे for instance Queen Mother, जो सावित्री की माँ है, जब उनको पता चलता है कि सावित्री सत्यवान को चूज करके आई है, एंड शी इज नॉट, हर चॉइस इज नॉट द राइट वन, उसको जिंदगी में बहुत दुख मिलने वाले हैं, तो वो तर्क करती हैं, वो कोशिश करती है पहले सावित्री को साइकोलॉजिकली समझाने की कि बेटा तुम्हारी चॉइस गलत है, तुम मान जाओ, ये सब बहुत फैंसीफुल है, ठीक है तुमने एक लड़के को चूज किया बट वो सही नहीं है, तुम दूसरे को चूज करो. उसको साइकोलॉजिकली वो समझाने की कोशिश करती है बुक 6 कैंटो 1 में. लेकिन बुक 2 में जब सावित्री कहती है कि मैं नहीं मानूंगी, एंड उसका भी बहुत सुंदर विवरण है जो हम सभी जानते हैं. माई विल इज अ पार्ट of the eternal will. My fate is what my spirit's strength can make. My fate is what my spirit's strength can bear. My strength is not the Titans, it is God's. सावित्री ने ये बोलने के बाद उसकी माँ उसको परसुएड नहीं कर सकती, लेकिन उनकी माँ को कुछ सवाल है, एंड बहुत बेसिक फिलोसॉफिकल सवाल है. शी वॉज नॉट एन अनलर्नेड अनएजुकेटेड वुमन, शी वॉज अ क्वीन, तो उसे उनको भी सब जानकारी थी, उनको भी सब मालूम था. इनफैक्ट क्वीन मदर की जो पर्सनालिटी इस कैंटो में उभर के आती है, दैट इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल टू स्टडी, कि उनको क्या क्या मालूम था, या शेरविन ने कैसे उन फिलोसफीज को इनमें इनकॉर्पोरेट किया है. सो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट शी आस्क्स इज कि ये दुनिया क्या है, क्या ये चांस से बनी है, एक्सीडेंट से बनी है, इसकी कोई डायरेक्शन है, नहीं है, हम कैसे समझें इस चीज को. सो वो नारद को ये क्वेश्चंस पूछती है, और आगे काफी सारे हैं, मैंने ये 2-3 क्वेश्चंस ही फिलहाल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ.
वो ये भी बोलते हैं कि गॉड्स आर ओनली अ विटनेस, गॉड्स का हमारी लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ रोते रह जाते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करके, फूल माला चढ़ा के या नारियल दे के हम सिर्फ बेग करते रह जाते हैं कि भगवान हमारी तरफ देखो, लेकिन हमारे सॉरोज वही होते हैं, हमारे सफरिंग वही होती है। सो वो एक्चुअली एकदम फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हम ह्यूमैनिटी गुजर रही है जिस क्वेश्चन से, वो क्वीन मदर पूछती है। And it's very relevant क्योंकि Queen Mother is a representative of all the humanity and her suffering and her problems. तो ये questions जो श्री अरविंद ने इतने beautifully इस कैंटो में इन्वॉल्व किए हैं, इसके सवाल, यही सवाल और यही जवाब उन्होंने लाइफ डिवाइन में भी दिए हैं। स्पेशली इन दिस कैंटो जिस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं लाइफ डिवाइन में, बुक 2 कैंटो 1 में उन्होंने बहुत सुंदर इस चीज को, वेदर वर्ल्ड इज अ चांस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एटसेट्रा वो बताया हुआ है। तो ये एक फिलोसॉफिकल एंगल है। सेकेंड जो श्री अरविंद ने, we mark the way in which Sri Aurobindo himself has incorporated a lot of different philosophies and realizations in Savitri. So another one that we have is the nirvanic experience of Savitri herself, जो कि book 7 में हम देखते हैं Savitri is on her journey to find the soul. तो वो एक स्टेप, एक पॉइंट पे पहुंचती है जहां पे उससे निर्वाण प्राप्त हो जाता है, और वो भी निर्वाणिक, श्री अरविंद उसकी फिलॉसफी लिखते हैं एक्सपीरियंस के साथ उसकी फिलॉसफी, और वो अनुभव क्या है हम इसको समझ पाएंगे, जो बुद्धिस्टिक, निहिलिस्टिक या अद्वैतिक भी बोल सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, जो फिलॉसफी जानते होंगे वो समझ पाएंगे। In that absolute stillness, bare and formidable, this is page 545, book 7, canto 6. In that absolute stillness, bare and formidable, there was glimpsed an all-negating void supreme that claimed its mystic nihil's sovereign right to cancel nature and deny the soul. So this is Buddhist philosophy which denies the soul, which cancels the nature. So we see how in Savitri's experience itself there's a philosophy, and one who will study this nirvana and the all-negating absolute, उसको पूरी Buddhistic philosophy और Advaitic philosophy इसमें पढ़ने को समझने को मिल जाएगी। So again this is marvel of Sri Aurobindo, जिन्होंने एक सावित्री के experience में वो पूरा उनका अपना अनुभव of निर्वाण प्लस उनका अनुभव और philosophy of Buddhism उन्होंने पूरी इसमें उतार दी है। ये कौन सा पेज है श्रुति? 545 भैया, कैंटो बुक 7 कैंटो 6। ठीक है। Next philosophy के ही terms में I am giving you some glimpses of different philosophies spoken by different characters or people or occasions in Savitri. So उसमें से और एक है डेथ। जब हम डेथ के डायलॉग सुनते हैं तो वो बार बार सावित्री को लाइफ के फिलोसफीज के बारे में रिमाइंड करते हैं। Yeah, and this is also the truth of our lives. This is now book 9, canto 2, page 592. Death only lasts and the inconscient void. I only am eternal and endure. I am the shapeless, formidable vast. I am the emptiness that men call space. I am a timeless, nothingness carrying all. I am the illimitable, the mute alone. I, death, am he. There is no other God. And there are philosophies which believe in this. There are philosophies which say, हाँ, आखिर मरना ही तो है, आखिर death ही सब कुछ है, तो हमें इतना जीवन में और क्या करने की जरूरत है, etc., etc. But you see here, अभी हमने थोड़ी देर पहले वो पढ़ा, the absolute, the perfect, the alone, which was Upanishadic affirmation of Brahman. And यहाँ पे death उसी dialogue में बोल रहे हैं, I am the illimitable, the mute alone. So we see the power of death here, the truth of death here, because हम इस चीज को deny नहीं कर सकते कि आज हमारी life की सच्चाई यही है कि death is the ultimate aim and goal of our life. चाहे हम किसी भी शब्दों में उसको बोले, medical terms में बोले, spiritual terms में बोले, but we know that we are all going to die. That is the truth of our lives. So ये harsh truth है जो already उन्होंने बोला है। जैसे और एक next few lines की बात कहते हैं, I death am the
one refuge of thy soul. हम सबके लिए अप्लाई करता है. Death is definitely a refuge. अगर हम बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, अगर हम बहुत सफरिंग में हैं, हमारी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा डिजीज्ड है, तो डेथ इज आवर ओनली refuge, which is an absolutely stark truth for us. It is the true philosophy of life that all of us live with every day. So that is again a very beautiful philosophy given. Another 2-3 philosophies that are given by there is somebody called Man of Sorrows. If this is into page 505. The triple soul forces. बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि जब तीन, जैसे कि अगर आप देवियां बोले या तीन वॉइसेस सावित्री को बोलती हैं कि मैं ये देवी हूँ, मैं तुम्हारी सोल हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट पोर्शन वी आर नॉट गोइंग. बट उसी समय एक नेगेटिव वॉइस भी निकल के आती है या एक इगोइस्टिक वॉइस निकल के आती है. एंड अगेन देयर इज अ ट्रूथ इन इट, व्हाट इट इज सेइंग, द ट्रूथ ऑफ द ईगो इज देयर, व्हाट इट इज सेइंग. एंड आज हम उससे भी रिलेट कर सकेंगे. I am the man of sorrows. I am he who is nailed on the wide cross of the universe. To enjoy my agony, God built the earth. My passion, he has made his drama's theme. He has sent me naked into this bitter world and beaten me with his rods of grief and pain. So imagine अगर हम किसी की philosophy समझने की कोशिश करें जो इस तरह की नेगेटिव फिलॉसफी में है या सॉरोफुल लाइफ में है, तो हम ये बोल देते हैं कि हाँ भगवान ने तो हमको जमीन पे भेजा ही इसलिए कि ताकि हम सफर कर सकें, हम पेन में रह सकें, because he is the man of sorrows. Sri Aurobindo himself says that he is a man of sorrows. So, and then he also refers to Christ here, who is nailed on the wide cross of the universe. So Christ को हमने क्या बना दिया है? मैन ऑफ सॉरोज. उनको देख के हमें दुख होता है कि अरे उनके साथ ऐसा हुआ और हम भी उतने ही दुखी हैं, हम भी रोज अपने क्रॉस पे चढ़ रहे हैं, हमारी तकलीफें झेल रहे हैं, सफरिंग झेल रहे हैं. तो क्या हो गए, हम पूरे समय दुखी रहते हैं बिकॉज वी आर मैन ऑफ पीपल ऑफ सॉरोज. उसी तरह से शेयर ने मैं पढ़ूंगी नहीं बिकॉज उतना टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन आगे देयर इज अ वॉइस ऑफ मैन ऑफ ईगो, देयर इज अ वॉइस ऑफ अ सेंस स्ट्रिकन मैन, मतलब मटीरियलिस्ट जो है वो क्या कहता है कि मैंने तो पूरे स्टार्स को भी कॉन्कर कर लिया, मैंने स्पेस को भी कॉन्कर कर लिया. What is death? What is God? There is nothing as such, क्योंकि मैं सबको conquer कर सकता हूँ. So you see, again, it is the truth of our ego. It is the arrogance of our mind. We say that yes, we have done this. So you see, from the Buddhist philosophy to the Vedantic philosophy to the materialistic philosophy, श्री अरबिंदो ने सारी चीजें इसमें बहुत ब्यूटीफुली एसिमिलेट करते हुए हमें अलग अलग फिलोसफी सावित्री में दी हुई. So when we study Savitri philosophically, we can actually enlist all, not only the Shadadarshan Boli, there are so many more philosophies beyond Shadadarshan also that we know. There are certain Western philosophies of Jean-Paul Sartre है या उनके भी glimpses हमको इसमें धीरे धीरे मिल जाते हैं जब हम really closely उन दोनों को पढ़ते हैं, एक comparative study करते हैं. तो glimpses in the sense कि जो crisis है, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे हम कई बार बोलते हैं कि वो क्या है, उसके बारे में भी श्री अरविंद बताते हैं कि हु इज मैन, व्हाट इज ही अप टू, वेयर इज ही गोइंग, इज ही डायरेक्शनलेस, व्हाट इज हिज कैपेसिटीज राइट नाउ, व्हाई इज ही सब्जेक्ट टू डेथ एंड सफरिंग, ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच अगेन हम परेशान होते रहते हैं कि क्यों हमें इतनी परेशानी हो रही, क्यों हमें इतनी तकलीफें मिल रही लाइफ में, वो सारी चीजें श्री अरविंद ने एड्रेस की हैं सावित्री में. उसके अलावा some people, especially those who like to do thesis, या कभी हम जब papers लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो there is some people who do thematic studies. जैसे some people have been doing studies on pain and suffering in Savitri as it is represented in Savitri. So जो book 6 है, जो नारद और क्वीन मदर के डायलॉग्स हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में the questions raised by the queen mother, the answer of deliverance given by Narad. So दोनों के questions and answers बहुत सुंदर है, and also of course Savitri in between and Ashwapati there to support all that. It itself is a full study by in itself कि अगर हम pain and suffering है उससे हम कैसे निवारण पा सके, उससे हम क्या कर सके, उसको हमारी pain की श्री अरबिंदो को कितना उनको जानकारी थी, कितना knowledge, कितना आत्मसात उन्होंने किया था, identify किया था हमारे pain के साथ, and that's why he could write about it in such great details.
Another couple of themes I'll just mention. There could be hundreds of themes. I mean, जो लोगों ने पूरी one cover to cover पढ़ी, they can come up with a lot of themes. But जैसे कि fate है, अभी same book, pain and suffering वाली जो क्वीन मदर और नारद का डायलॉग है, उसमें वो ये भी सवाल पूछती है कि इज देयर एनीथिंग कॉल्ड फेट, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड डिटर्मिनेशन, क्या हमारे पास फ्री विल है, क्या हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब एज अ रिसर्चर कैन फाइंड इन दिस कैंटो, स्पेशली इन दिस कैंटो, और भी सावित्री में दूसरी जगह मिल जाएगा. So then the questions regarding death and rebirth and immortality, all those are themes which can be studied in Savitri. In the beginning, as we spoke, another approach is psychological approach. As in कि हम शेरविन ने जो psychology प्रस्तुत की है इसमें, जैसे even when we say it was the hour before the gods awake. Now, once I was listening to a psychologist and she mentioned that, you know, even if we don't go to the Vedic symbolism and all that, we can always say that सुबह 3 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, actually we many times literally take it as a ब्रह्म मुहूर्त about which Sri Aurobindo is writing, which has all the double meanings. लेकिन साइकोलॉजिकली सिंह, हाँ, वो ब्रह्म मुहूर्त है जिसमें हम उठना नहीं चाहते, हमारी आंखें आधी खुली हुई हैं, और उस स्टेट में फिर धीरे धीरे वो सावित्री का इंट्रोडक्शन होता है. लेकिन जो उस कैंटो का विवरण है, अगर आप देखें और उसको अगर आप सावित्री के कॉन्टेक्स्ट में पूरा पूरा ना देखें, तो आपको लगेगा अरे ये तो साइकोलॉजिकल स्टेट है जस्ट बिफोर वी वांट टू गेट अप एंड लीव द बेड, बिकॉज हम आंखें नहीं खोलना चाहते, हमें धीमी धीमी लाइट कहीं दिख रही है ऑन द होराइजन, यस देयर इज लाइट कमिंग अप, एंड जो हमारे मन के अंदर चल रहा है, क्योंकि हम सबकॉन्शियसली चीजों को याद करने लगते हैं. जैसे जैसे सुबह होती है, हम उठने वाले होते हैं कि अब हम क्या काम करने वाले हैं, कल क्या काम किया, वी स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग थिंग्स. So that kind of an introspection also people can do through this. And of course, psychologically, as Charuji said, that this can be a great help, a guidebook, etc., etc. Another very, very important part or an approach to Savitri that we can study as autobiography of the mother and Sri Aurobindo. क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली दोनों ने लिखा था that our lives have not been on the surface for anybody to see and understand. मदर ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि मेरे आउटर लाइफ के डिटेल्स को आपको समझने की जरूरत नहीं. श्री अरविंद ने भी इस चीज को डिनाई किया था. एंड येट वी टॉक अबाउट हिज आउटर लाइफ बिकॉज दैट इज ऑल वी नो अबाउट. दैट इज व्हाट, you know, we don't understand what their inner lives have been. So if we want to know their inner journey, then it is Savitri which will give us that inner journey. Ashwapati's yoga, and we have to remember that both the yogas were done by Mother and Sri Aurobindo both. But Sri Aurobindo, because he's presenting it as a story here, he has given the Ashwapati's yoga part, and some people do say that it is Sri Aurobindo's yoga of ascent, which is done by Ashwapati, Savitri's yoga of descent, which is done by Savitri. I mean, Mother's yoga of descent. So correlation बहुत बहुत क्लोज है इस चीज का. So अगर हम एक्चुअली श्री अरविंदो मदर की इनर जर्नी को समझना चाहते हैं, उनकी मेहनत को समझना चाहते हैं, इनर जर्नी तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उस मेहनत को, उस एफर्ट को समझना चाहते हैं, तो हम सावित्री को एज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मदर एंड श्री अरविंदो बोथ पढ़ सकते हैं. There's one more very interesting thing which a lot of people, most of the people rather, do and try to do is the visionary quality. What is the vision of Savitri? What is the central vision of Savitri? And then base the entire book on that central vision. For instance, I'll just read a couple of lines. This is page 699. If we suppose were to start our reading of Savitri from here, when all thy work in human time is done, the mind of earth shall be a home of light, the life of earth a tree growing towards heaven, the body of earth a tabernacle of God. Awakened from the mortal's ignorance, men shall be lit with the eternal's ray, and the glory of my sun lift in their thoughts, and feel in their hearts the sweetness of my love, and in their acts my power's miraculous drive. My will shall be the meaning of their days, living for me, by me, in me they shall live. So this is a work accomplished. This is after Savitri has already conquered death, and this is the boon that she is getting from the Supreme. But now we take it back. This has been accomplished. How was it accomplished?
we go back in the story. What is this vision? What is here Sri Aurobindo telling us? What is that vision that has been accomplished? अगर वो हम समझने की कोशिश करें तो फिर हम उसे सावित्री को पूरा 24 घंटे पीछे जाके समझ के 12 महीने पीछे जाके समझ के उस चीज को एक डिफरेंट विजन से समझ सकते हैं. But the last portion that I had kept for our longer discussion is like, I'll just recapitulate. We have done linguistic approach, metrical approach, Vedic symbolic approach, Upanishadic approach, philosophic approach, psychological approach, thematic approach, and guidance or healing, etc. That approach, autobiographical approach, visionary approach. This much we have done till now. Now, the last, because I'm a student of literature, so that fascinates me the most, is the literary approach. Now, literary approach में भी there are a lot of nuances, जो मैं बहुत superficially बताऊंगी, is that we all know that Savitri is the longest English epic, in a way, complete English epic that has been written. Of course, we know there are some cantos which are incomplete, but considering that Sri Aurobindo had finished writing it, it is not that he left it incomplete and he, left this world or this body. It was not that. In his consciousness, it was complete. So this is the longest poem in English language. Now, iska jo structure hai, because we are talking from the literary point of view, in any epic in English, we have 12 cantos. And we have a beginning, a middle, and an end. And there is a progression, there is a growth of the character given in that. So these are few outer nuances which are very much present in Savitri. Very much Sri Aurobindo has utilized them. बाकी चीजें इसमें ना लाते हुए मैं एक दो चीजें और बोलूंगी कि लिटरेचर में हम क्या करते हैं, जब हमें कोई थीम पढ़नी होती है या कुछ समझना होता है तो हम यूजुअली कैरेक्टर स्टडी से शुरू करते हैं. And in Savitri, if you see, there are not too many characters. Unlike an epic, अगर आप महाभारत देखिए, Iliad, Odyssey देखिए, रामायण देखिए, innumerable characters and all important. Not only Ram and Sita, but there are so many innumerable important characters. Even Ravan is important. Even Bharat is important. Every character has a psychology. Mahabharat even more. Hundreds and thousands of characters, जिनके नाम भी याद रखना मुश्किल होता है. But every character again has a psychological background. But here is Savitri. 4 main characters, two or three extra characters. And Sri Aurobindo binds this entire book. But when we study, I'm not just talking of Savitri and Satyavan, but just imagine the study of Queen Mother. What is her character shown as a queen? How is it that she buckles in as a queen? उस समय में जब उनको मतलब शेरविन एक बहुत खूबसूरत लिखते हैं कि queen indeed she is, मतलब मैं कोट नहीं कर रही हूँ, but वो लिखते हैं कि she is the queen but becomes human for some time. Now this is so beautiful because Ashwapati doesn't become human for that time when he sees that black shadow on Savitri, but Queen Mother does. So there is this queen and ordinary phase in the Queen Mother. When we study Narad, from the mythological perspective and from what Sri Aurobindo has made him into. Mythologically, in fact, unfortunately, Narad has always been represented as a comic figure, as a person who is there when he is not supposed to be there, perhaps, or just aake kuch bata ke chale jate hain that creates a commotion in everything. But here, so beautifully, seriously, Sri Aurobindo has created the whole significance of Narad. And R.Y. Deshpande ji, of course, has done a very beautiful study on Narad's arrival at Mathura, the significance of his arrival at Mathura. Yes. So that is, again, the whole, I wouldn't say the character, but the development of the whole thought around Narad, why he came at that point, what was his significance, not only in the ancient mythology, but in the new epic that Sri Aurobindo has written. Even Sri Aurobindo has given a very, very small 6 or 7 lines to Satyavan's mother. That again speaks, I would say, if not volumes, some pages about Satyavan's mother. How considerate a mother-in-law she was. How sweet and how grateful a mother-in-law she was. Because she permits Savitri to go and be with Satyavan for that one day. And she says, you have served me. You're like a goddess who has come to serve us. She tells her daughter-in-law. कौन सी mother-in-law, daughter-in-law को इस तरह के, the realization that she has.
So that is again, that speaks so much about her character. Dyumat Sena, again, Dyumat Sena has been given very small part in this entire thing, but just a little few dialogues that he speaks for Savitri, where were you, or the concern that he has for both his children, the children who have not returned home even in the evening. So that becomes so very significant, a character understanding. And of course, Savitri, human and divine, humne pehle hi, we have studied in the previous first talk that I shared with all of you. So that human divine character of Savitri. Then Satyavan being so beautiful, tender, handsome, loving, devoted husband and son, a perfect balance of the human characters I'm talking of, not only the divine characters. So एक स्टडी डेफिनेटली ये हो सकती है कि हम इसको कैरेक्टर स्टडी अगर हम इन 6-7 कैरेक्टर्स की करें तो the whole thing that emerges as Savitri is very beautiful. Of course, छोटे-छोटे, what do you say, mention of like, mother of mind and this mother of falsehood, etc., is there, but we are not going to that because they are not personalities which are being developed. They have been mentioned by Shri Aurobindo. Now, what is my major focus here is I had studied a few years ago something called an aesthetic approach to Savitri, or what Shri Aurobindo also writes, aesthesis of Savitri. Of course, in the very given time, 10 minutes, I'll just brief on it. Is there is a whole different theory. मतलब आप literally नाट्य शास्त्र को सावित्री पे apply कर सकते हैं. आप English literary criticism को सावित्री पे apply कर सकते हैं. So because I was talking of the literary approach. मतलब इसमें क्या होता है कि एक theory हमको दी जाती है कि जैसे रस निष्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में नाट्यशास्त्र में बहुत बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है. अब हम उसको अगर सावित्री पे अप्लाई करें, सो मैंने कुछ कोशिश की थी बीच में कि मैं सावित्री में जो रस हैं उसको निकाल के लाऊं, और कौन कौन से रस हैं जो श्री अरविंद ने एक्चुअली पूरे एम्प्लॉय किए हैं और जो हमें सावित्री में नहीं मिलते, जो मुझे नहीं मिले, शायद दूसरों को मिल जाए, जो मैं नहीं ढूंढ पाई आज तक. सो आई जस्ट ब्रीफ थ्रू सम. One, of course, we get Shringara Ras, which is the relationship between Satyavan and Savitri. The first meeting of Satyavan and Savitri. It's extremely beautiful. So I'll just read a couple of lines here. जहाँ पे वो दोनों first time एक दूसरे से मिलते हैं and गंधर्व विवाह होता है. उस समय a candid garland set with simple forms, her rapid fingers taught a flower song, that the stanza'd movement of a marriage hymn. So just to understand that she is herself making a garland for Satyavan. So a candid garland set with simple forms. No, not too much of decoration, not too much of ornamentation, but a simple garland. Her rapid fingers taught a flower song. So it was a flower song that she was making for Satyavan. The stanza'd movement of a marriage hymn. Marriage के time में जो hymn गाई जाती है, वो already उनकी, the way she was making the garland itself, that hymn was like, almost being felt. Towards the end of these lines, she says, as if inclined before some gracious God, who has out of his mist of greatness shone to fill with beauty his adorers' hours, she bowed and touched his feet with worshipping hands. She made her life his world for him to tread, and made her body the room of his delight, her beating heart a remembrancer of bliss. Now this is the relationship between Satyavan and Savitri. She made her life his world for him to tread. The perfect love. And of course, we have later on the description of how Satyavan also lays his life towards, opens his life towards Savitri, and he says, that one word sentence that Shri Aurobindo mentions, descend. He just says, descend, come into my world. So that is so, again, very beautiful, because that's the relationship. And I would one thing mention here, जिस तरह से श्रृंगार रस को मेंशन किया जाता है, यूजुअली अ वेरी सेंसुअल, अ वेरी प्लेजर ओरिएंटेड श्रृंगार रस, जिसे हमें यूजुअली मूवीज में या थिएटर में या इस तरह से देखने को मिलता है, Shri Aurobindo has elevated it into a very spiritual, sublime, beautiful level.
It is not the same Gandharva Vivaha as we might see in, say, Kalidasa. There is a Gandharva Vivaha which is extremely sublime. It is the soul marrying the soul, where Sri Aurobindo does mention that they at once recognize each other. And that is the Shringara, the heightened spiritual Shringara ras that we see. Then further, another rasa, Karun ras. Karun, of course, I would say Savitri itself is Karuna for us, because Sri Aurobindo has graced us with Savitri. So that itself is his Kripa and Karuna. But still, in terms of Savitri, very quickly, जहाँ पे Savitri assurance देती है the three Madonnas को. One day I will return, a bringer of strength, and make thee drink from the eternal's cup. Next, one day I will return, a bringer of light. The last, one day I will return, his hand in mine, and thou shalt see the face of the Absolute. So एक करुणा है और एक assurance है इसमें. It is not just a pity. It is not just हाँ ठीक है मैं हो जाएगा. It is not that. It's a firm assurance that this will happen. I will do this. Another instance of karuna जहाँ पे अश्वपति को जो divine mother boon देती है. O strong forerunner, I have heard thy cry. One shall descend and break the iron law, change nature's doom by the lone spirit's power. This is again, I feel, is absolute Karun Ras. Because Supreme Mother has agreed to descend onto this earth, is her Aseem Kripa, unki Aseem Karuna hai कि उन्होंने agree किया कि मैं इस पृथ्वी पे आके इस pain and suffering भरी दुनिया में मैं participate करूंगी. So definitely, I feel it is Karuna. Now, a couple of a very different emotion we see here is the Raudra Ras, and we see it in multiple occasions. I have just brought in two here. One is in the Triple Soul Forces, when the Mother of Might, she speaks. I smite the Titan who bestrides the world and slay the ogre in his blood-stained dead. I am Durga, goddess of the proud and strong, and Lakshmi, queen of the fair and fortunate. I wear the face of Kali when I kill. I trample the corpses of the demon hordes. I am charged by God to do his mighty work. Uncaring, I serve his will, who sent me forth, reckless of peril and earthly consequence. Another Raudra we will say literally as a Tandav of Shiva. A giant dance of Shiva tore the past. There was a thunder as if of worlds that fall. Earth was overrun with fire and the roar of death, clamoring to slay a world his hunger had made. There was a clangor of destruction's wings. The Titan's battle cry was in my ears. Alarm and rumor shook the armored night. So this is, according to me, is Raudra जहाँ पे Shri Aurobindo literally Shiv Tandav का explanation कर रहे हैं कि कैसे वो destruction कर रहे हैं for a new creation. Even in Madonna of Might, where she says, I am charged by God to do the mighty work. So this is not destruction per se. This is not just a Raudra. जैसे हम जब तांडव दिखाते हैं usually serials में, and that full with effect, you know, कि पृथ्वी हिल रही है, प्रलय आ रहा है, and that's it. प्रलय आ चुका है. But this pralay is for a new creation. And Shri Aurobindo does mention that this is not a one-sided pralay. Then something like a Bhayanak Ras. And this again we find ample in Savitri, because when we read the cantos like the mother of falsehood and the god of evils, or Shri Aurobindo's journey into the vital world, or the journey into night, ये सारे ही हम पढ़ते हैं तो भयानक लगते हैं. इनफैक्ट मुझे कभी कभी वो पढ़ने में बहुत डर लगता है, स्पेशली शाम को कभी पढ़ के मैं कभी सो गई हूँ तो मुझे बहुत भयानक सपने आए हैं, क्योंकि वो इतना लाइव विजन है वो श्री अरविंद का, इतना लाइव एक्सपीरियंस है कि मैं आई मीन टू रीड दोस आई फील वेरी स्केयर्ड एट टाइम्स. However, Shri Aurobindo does not shy away from presenting the Bhayanak also. That this is one very beautiful thing that in fact Shri Aurobindo remarks in one of his letters. कि जब उनको बोला गया था कि should there be ugly, anything like an ugly thing in literature or whatever we write, तो उन्होंने एक बात कही थी कि if that ugliness is employed in literature to bring out the ugliness, then it's acceptable. For instance, जैसे
कीड़े मकोड़ों का कोई जिक्र हुआ हो, या श्री अरविंद खुद ही वो जो gnomes and goblins and कीड़े मकोड़े या elves या उस तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज के वर्णन करते हैं. ऑफ कोर्स गॉब्लिन्स एंड ऑल आर गुड, बट जो दूसरे एनर्जीज हैं, वाइटल फोर्सेस हैं, वाइटल क्रीचर्स हैं, इनका जिक्र करते हैं. यहाँ तक कि वो लिखते हैं वो स्लाइमी क्रीचर्स हैं, गिलगिले से प्राणी हैं. ऑल दैट ही राइट्स. ही डजंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग कि ये सब नहीं लिखना चाहिए, ये लिटरेरी एस्पेक्ट से अच्छा नहीं है. नो, ही राइट्स बिकॉज ही ब्रिंग्स दैट jugupsa, he brings that actually there is this rust called jugupsa, if I'm not mistaken in this. Yeah, I've not brought, but yeah, वो हमें एकदम से ये करते, अरे बाप रे, ये तो विभत्स है, ये अच्छा नहीं है दिखने में. So उस तरह की चीजें भी एम्प्लॉय की जा सकती है in a piece of literature. So भयानक में I would only read here a little thing, because we know when Satyavan is lying on the lap of Savitri, there is a silence around, because jab tak wo zinda the tab tak nature was alive, everything was alive, and suddenly when death is approaching, everything becomes still. And we know when even din dahade jab koi cheez achanak se still ho jati hai, to wo bada डरावना hota hai. And Sri Aurobindo has captured this very beautifully. The shadow of a remote uncaring god, doomed to his not the illusory universe, cancelling its show of idea and act in time and its imitation of eternity. She knew that visible death was standing there, and Satyavan had passed from her embrace. Now, यहाँ पे why I mentioned the first line, the shadow of a remote uncaring God. Shadow, Sri Aurobindo uses S capital. So perhaps he is referring to the coming of death. So everything is under that shadow of death, which has made everything still. जहाँ पे यहाँ पे Sri Aurobindo एक और जगह लिख रहे हैं, something had come there conscious, vast and dire. Near her she felt a silent shade immense. Again shade. So imagine it's a day afternoon, it's a noon, and she's feeling the shade, chilling the noon with darkness for its back. So that chill that we get, डर के मारे हम ठंडे हो जाते हैं. So Sri Aurobindo says that the chilling during the noon, a terror and an anguish fill the world. So that is the bhayanak ras that he creates. If we can actually imagine ourselves in a jungle alone, and in that situation, we will all feel scared. Then, of course, the Veer ras, we know that Savitri, when she faces death, there's not an iota of fear in her. And we, of course, have read so many lines, but just a couple of them, which at times, fascinate me. O death, thou speakest truth, but truth that slays. I answer to thee with the truth that saves. Now, she is not scared of him. In fact, एक जगह वो लिखती भी है कि I'm not scared of you, but anyway, another जो वीरता है सावित्री की, वो उसमें नजर आती है जब उसको boon दिया जाता है. The Divine Mother, the Supreme gives her the boon, but she refuses. The temptation, she refuses. I climb not to thy everlasting day, even as I have shunned thy eternal night. To me who turn not from thy terrestrial way, give back the other self my nature asks. Thy servitudes on earth are greater, King, than all the glorious liberties of heaven. I know that I can lift man's soul to God. I know that he can bring the immortal down. So again, this is Veer, because इतना बड़ा boon जो सावित्री को मिल रहा था, जो सुप्रीम उनको इतना बड़ा boon दे रहे थे, that she refuses. That certainly is a mark of वीरता in Savitri. Another couple of rasas जो मैं just skip करूंगी. हमको पता है जो सावित्री का जो विश्व रूप हमें देखने को मिलता है after she conquers death. That is again, a mighty transformation came on her, where after conquering death, she is transformed. She comes out as an effulgent, beautiful, golden Savitri, the real Savitri. Unka jo Vishwarupa darshan hai, that is almost adbhuta. So that is again the adbhuta ras that Sri Aurobindo has captured, I feel. And one more time that we see
Ashwapati having the vision of the Divine Mother. At the head she stands of birth and toil and faith, the vision of the Divine Mother. That is again Adbhut. Because there he's not only describing her form and all, but her relation with us, the magnet of our difficult ascent. Here also a halo of the indwelling deity. So हमें वो विश्वरूप सावित्री का वो effulgent वो golden सावित्री हमें यहाँ पूरी नजर आ रही है. That adbhuta thing is very much there on your face. Then of course we will find some glimpses of Vatsalya, which is not the traditional rasa, but उसको भी include किया गया है. यहाँ पे I'll read the Dyumat Sena since I mentioned. But where was thou? Thou hast tormented gladness with fear's dull shadow. O my child, my life, what danger kept thee for the darkening woods? Or how could pleasure in her ways forget that useless orbs without thee are my eyes, which only for thy sake rejoice at light? So this is again the Vatsalya, the frame, the Vatsalya of Dyumat Sena. And I'll not go through other things, but two more rasas, Shanta and Bhakti, that we do see in Savitri. And the last impact, which the Upanishads also say, Raso Vaisaha, and Ras is all, Rasa indeed is he. And that supreme rasa about which even Sri Shankaracharya writes, Sri Aurobindo writes, Upanishads write, is the Ananda rasa. So what we gain at the end from reading Savitri, it could be any of these rasas, but ultimately it is the Ananda rasa. Because that is the highest rasa that any work of art, any poetry, any mantra chanting, any meditation that can give us is the ultimate experience of Ananda. Peace comes with it, of course, but there is that elevation, that the lightness, the levitation. I mean, we all know what it would mean when we read Savitri. So that is where I feel not just the literary study, but when I was studying this, I felt, my God, Sri Aurobindo has not only employed, I mean, not consciously, but we can find these Navarasas or 12 rasas in Savitri, heightened by Ananda Rasa, of course, the highest one. But still, each one of them have been sublimated, whether it's Karuna, whether it's Vatsalya, whether it's Bhakti, all of them again have a very, very unique spiritual dimensions that we will rarely find in other work. And of course, finding all of these rasas in one work is again something very unique about Savitri, because usually a work is written in a single rasa scale. You know, Kalidas को पढ़ने से ज़्यादा करके श्रृंगार रस पढ़ने में आएगा, या एक या दो रस और. But here is an epic जहाँ पे हम almost, if I can say, 12 रस हम ढूंढ सकते हैं. जो मुझे नहीं मिला बहुत clearly, that was जुगुप्सा, जो मैं पूरे से इससे ढूंढ नहीं पाई. लेकिन I'm sure somebody can find it and be able to look it. But that is what Savitri ultimately is for all of us. Ananda Rasa, and that is what we are here to learn. Whether we take any approach, linguistic or psychological or Vedic, the ultimate result is the Ananda Rasa in Savitri. Thank you.